Hello students, welcome to OLE. Today we will start a new topic which is known as balance of payment. बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके सीबीएसई में फॉरेन एक्सचेंज के साथ एड अप करके 6 मार्क्स का वेटेज रखता है. आईएससी में दिस चैप्टर कम्स फॉर लेट्स से 3 to 4 मार्क्स डिपेंडिंग ऑन the short answer questions or the long answer question. अगर long answer question है तो 3 marks plus 2 marks that is 5 marks. So ISC और CBSE both में ISC और CBSE both ISC और CBSE both it has a weightage of around 5 to 6 marks. अब बात आती है what is the meaning of balance of payment. बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्चुअल में है क्या? पहली बात, इट्स अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. व्हेन आई एम सेइंग स्टूडेंट्स दैट इट्स अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट मीन्स इट इंक्लूड्स मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस. ओके, फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, it calculates the exports and imports of goods and services of a country. और तीसरा, ये हमेशा एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही बनता है. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इंक्लूड्स एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. basically students forget these two things. What they write is, they write exports and imports related to a country, but you should mention that exports and imports of goods and services. गुड्स एंड सर्विसेज जैसे ही आप लिखते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि अच्छा, इसमें फिजिकल ट्रांजैक्शन भी है और नॉन फिजिकल. गुड्स दैट इज अ फिजिकल ट्रांजैक्शन, आप छू सकते हैं. नॉन फिजिकल दैट इज सर्विसेज, दैट इज लाइक प्रोफेशन ऑफ अ लॉयर और सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स. सो दीज आर ऑल नॉन फिजिकल गुड्स. सो गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री will be included in balance of payment. Lastly, it is for a specific period of time. ऐसा नहीं होगा कि ये 10 साल या 12 साल का है. ओके, what will be included is a specific time, let's say 1 year or 2 years. majorly हमेशा 1 year का ही होता है. ये आपको कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज के बारे में भी एक पिक्चर देता है. दूसरा जो इसका इमेज रहता है, that is the objective, is to know how much for a particular period, how much export or import is being done by that country. अब एक सीधी सी बात है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जानना जरूरी क्यों है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जानना इसलिए जरूरी है ताकि हमें ये पता चले कि डोमेस्टिकली हम लोगों ने कितना प्रोड्यूस किया है, उसका बाहर दैट इज इन फॉरेन मार्केट व्हाट्स द डिमांड एंड हाउ मच वी आर परचेजिंग फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड. ठीक, अगर बहुत ज्यादा हो जा रहा है फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, दैट इज वी आर परचेजिंग अगेन एंड अगेन फॉर ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, then obviously it is bad, and that is we have to restrict our purchasing. Somewhere down the line we have to be self-sufficient so that we can produce those goods which we are purchasing from outside. Why we have to do that? Because if we are continuously purchasing from outside, we are paying more. Again वहां पे फॉरेन एक्सचेंज रेट आपका अप्लाई हो जाता है. तो जैसे ही वो अप्लाई होगा, ज्यादा से ज्यादा आपको मनी स्पेंड करना पड़ेगा और आप कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो जाएंगे उस कंट्री पर. सो टू ब्रेक दिस साइकिल वी हैव टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच वी आर लेट्स से परचेजिंग फ्रॉम आउटसाइड. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्चुअल में इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्चुअली यहां पर
रोल प्ले करता है। ज्यादातर बैलेंस ऑफ पेमेंट कब एग्जिस्ट हुआ? आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। ये और प्रोमिनेंट तरीके से हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। सी, ग्लोबलाइजेशन था या नहीं था, दैट डज नॉट मैटर। द फॉरेन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स were always there in British era and after the independence. But the point is कि जब ग्लोबलाइजेशन हुआ 1981 में, दैट इज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जब वो हुआ उसके बाद इसका जो एम्फेसिस था या इंपॉर्टेंस था वो थोड़ा और बढ़ गया। तो आफ्टर, आप अगर कोई भी आपसे पूछे दैट व्हाट्स द इंपॉर्टेंस एंड हाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट बिकेम इंपॉर्टेंट फॉर अस, सो योर आंसर शुड बी दैट whenever there is a trade, balance of payment plays its role. But after globalization, obviously the impact or the influence of balance of payment reaches more or has grown more in Indian economy. तो balance of payment का छोटा सा एक जो पार्ट है वो हम लोगों ने अभी पढ़ा, that is financial statement होता है, that is it includes monetary transactions, exports and imports obviously of goods and services. Again students, गुड्स अगर आप लिख रहे हैं तो सर्विसेज भी लिखिएगा, ठीक? डोंट राइट ओनली गुड्स और ओनली सर्विसेज, नो, इट इंक्लूड्स बोथ फिजिकल एज वेल एज नॉन फिजिकल टर्म्स। एक स्पेसिफिक पीरियड, तो ये 3 पॉइंट से जोड़कर हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट मिलता है। एक फिर से मैं थोड़ा सा एक लाइन में बता दे रहा हूं, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट which includes exports and imports of goods and services of a country over a specific period of time. So this is what balance of payment is. Next हम लोग पढ़ेंगे इसके components. Next students, we will see the components of BOP. BOP stands for balance of payment. जब मैं कह रहा हूँ कि components means items that are included in balance of payment. So what are the heads under which we are dividing this whole balance of payment? So the first head is current account. Okay, so the first head is current account. Next head we have capital account. Let's start from the current account statement. Now what is a current account? Current account included all those goods and services which does not affect liability or does not create liability. So current account में हर एक चीज आएगा जहां पे आपका liability के साथ कोई भी impact या कोई भी relation ना हो. So इसमें पहला जो part आता है that is balance of trade. ठीक, नेक्स्ट आता है आपका बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका वो स्टेटमेंट है जहां पर हम गुड्स दैट इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को इंक्लूड करते हैं। ठीक, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड हमेशा गुड्स को लेकर ही बात करेगा। इट विल ओनली इंक्लूड गुड्स, इट वोंट इंक्लूड एनी सर्विसेज। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड, इफ समवन आस्क यू व्हाट इज अ बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड हाउ is this different from balance of payment, then you have to say that balance of trade includes export and imports of goods only, and in comparison to balance of trade we have balance of payment where goods and services both are being included. तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट एक तरीके का लग रहा है, लेकिन नहीं, बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ गुड्स की बात हो रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट गुड्स एंड सर्विसेज और भी चीजों को इंक्लूड करता है। लेकिन हम लोग अभी जस्ट सिंप्लीफाइड वे में पढ़ रहे हैं, तो गुड्स यहाँ पे सिर्फ आता है और यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड्स गुड्स एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स बोथ। नाउ डू रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट्स, दैट बैलेंस ऑफ ट्रेड comes under current account
and current account comes under BOP. So balance of trade is not a separate head under BOP, or BOP does not come under balance of trade. Balance of trade is one of the item in current account, and current account is one of the component of balance of payment. So this is the basic difference. Okay, तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा कि इसमें तो सबसे पहली बात गुड्स एंड सर्विसेज आ जाते हैं, इसमें सिर्फ गुड्स आते हैं. ठीक. दूसरा, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन इंडिविजुअल अकाउंट जिसके अंदर ये दोनों चीजें आती हैं. ठीक. अब बात आती है कि अगर यहाँ पे सिर्फ गुड्स है तो सर्विसेज क्या होगा. सर्विसेज के लिए यहाँ पे एक एस्ट्रिक बना के हम लोग सर्विसेज, बैलेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करके पढ़ते हैं. which included both the services of goods, both the goods and services. So balance of trade अगर आपसे कहा जाए directly it's a good related, and balance of goods and services includes both the thing. Majorly दो चीजों पे ही ये हमेशा डिवाइड होता है करंट अकाउंट. So balance of trade जो कि goods and services के साथ रिलेटेड है. Balance of goods and services obviously includes all the services. Now balance of invisible items क्या क्या इंक्लूड करता है. पहला, balance of factor services. Now student, I hope you know what is factors of payment or what is factors of production. Factors of payment, जो factors of production को रिटर्न में मिलता है, those are known as factors of payment. और factors of production जो प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं या करते हैं. इकोनॉमिक्स में factors of production are known as land, labor, capital, entrepreneur, and factor payments are wages, rent, interest and capital. So anything which includes land, labor or entrepreneurs return will come under this. Next part of this, that is balance of invisible items, are balances of non-factor services. Now this one is very easy. जो भी factor services के अलावा items बच जाते हैं, any services, any payments of the services which does not come under this balance of factor services will come under balance of non-factor services. Best example, banking. Banking यहाँ पे नहीं आएगा, banking यहाँ पर आएगा. So any items which are not included in factor services will come under balance of non-factor services. The third part of invisible items is current transfers. Now what is a current transfer? If let's say US has gifted us $1 lakh, then that $1 lakh will come under current transfers. So any gifts, any donations, any help received by the foreign country or we are giving them will come under current transfers. Again, balance of payment. Balance of payment का पहला component है current account. Current account में आपके दो major components है, that is balance of trade, balance of invisible items. Balance of trade includes only goods. Then comes balance of goods and services. Again, it is a sub part of this which includes balance of goods and services. Balance of invisible items includes balance of factor services, balance of non-factor services and current transfers. So this is all everything about current account. Current account हमारे present चीजों को show करता है. It does not include any item which has an impact on liability. It does not create any liability. Okay, so current account liability के साथ इसका कोई भी impact नहीं है, कोई भी relationship नहीं है, और ये तीन items आपकी major current account का part हैं. Students, in your exam, usually they ask that explain the component of current account or explain the component of capital account, which we will do it later on. तो अगर ऐसा आता है तो how will you start?
firstly you will say current account is a part of balance of payment. You have to say this. Why? वरना current account क्या है या किसके अंडर आता है, क्या वो कैपिटल अकाउंट के अंडर आता है या बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर आता है या बैलेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अंडर आता है, ये पता नहीं चलेगा. सो यू हैव टू मेंशन, द फर्स्ट लाइन शुड बी दैट करंट अकाउंट कम्स अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट. नाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट वहां पर उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. व्हाट इज द करंट अकाउंट? देन अगेन two lines, that current account are those items or is the account which includes those items which does not include or impact the liability side. Okay, so ये आपके current account है. Then you have to mention that it includes balance of trade, balance of invisible items. Then you have to separately explain what is the balance of trade, what is the balance of invisible items. And under balance of invisible items, you have to mention three subparts, that is balance of factor services, balance of non-factor services, and current transfer. Under balance of trade, you have to mention that firstly, it includes only goods, and subpart of this is balance of goods and services, which has both goods as well as services under the head. So students, today we have done the balance of payment meaning and the current account. Next class, we will continue with the capital account. Thank you.